Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Yeah, this is just to know am I audible or not. तो अगर कोई एक भी बोल देगा तो थोड़ा मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी आवाज आप तक आ रही है. So again we have the class for FS Lab. This is second class we are doing in this semester for Fabric Structure Lab. And as we have done already, I will just remind you that we have started our fabric analysis introduction with these three objects. These are the basically three objects of this subject or this fabric analysis, means the purpose of analyzing the woven fabric. So just to summarize it again, the first object is reproduction of same fabric. And when we are doing this, why we need this, that already we have done in the previous class. So in the most of the time, we have the situation that we are getting the same, we are getting a fabric sample from the market, and we have a particular order, a particular meters of fabric to produce in our industry. So for that purpose, first we are analyzing that fabric sample, and then if it is within the limit and if it is viable to produce in our industry with the effective cost, economical fabric or competitive fabric as compared to market, then we are going for reproduction of the same fabric in the industry. So every weaving industry is having its own department, which is known as design and development department, who is performing, who is responsible for this fabric analysis. Then on the basis of the previous sample, also the same sample which we have analyzed, sometimes we are not going to reproduce it. We produce the fabric with some modifications, or even we are developing a new fabric on the basis of that. And third is to find out the cost of fabric, so that we can know, we can compare with the market price. And if we are able to produce the fabric with the competitive prices, then only we will go for the reproduction. Otherwise, we will not produce this fabric, because if we are getting higher cost, if it is not economical, then it will not, our marketing people will not be able to sell the fabric in the market. So there is no purpose to produce this fabric. So that is also very important. Whenever we are doing analysis, then we are finding out the cost and observing the viability of the fabric, that we will be able to sell the fabric and what will be our profits, because every industry is working for profits. So if we are getting some profit, then we will produce the fabric in bulk according to the requirement of the buyer. So suppose one buyer requires 500 meters, other buyer requires 300 meters, other buyers require 200 meters. It means total requirement is 1000 meters. So we will produce 1000 meters of fabric. So accordingly, we will plan the length of the warp on the weaver's beam, so that we get 1000 meters of fabric. And all these things, how we are achieving all these things, that we will study in the subject fabric analysis or fabric structure lab. So students, we have taken these apparatus will be required for this lab. So yeah, and I have suggested you to arrange these if it is possible, like counting glass, counting needle. क्राफ्ट पेपर आपको थ्योरी में चाहिए तो वो तो आपने अरेंज कर ही लिए होंगे. सीजर सब घर में होती हैं, कैलकुलेटर सबके पास हैं, स्केल पेंसिल सबके पास हैं. बिजली बैलेंस के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो थ्योरेटिकली हम समझाएंगे बिजली बैलेंस से हम काउंट कैसे मेजर करते हैं, बट प्रैक्टिकली we will be able to just demonstrate it with the help of some video that we will do later on. And but what you can do at your home, for that we will take another method by using some small electronic balance. If it is available nearby you, you can go through that. Basically, you have to find out the, you have to measure the weight of particular threads, like 10 threads, 20 threads, 30 threads, you have to take out from warp or weft, and then you have to measure the weight. Please, Darshan, mute yourself.
Now we are starting our topic. What are the parameters or particulars we have to analyze so that we can get the loom parameters or loom particulars, and by taking those loom parameters on loom, or by setting the loom according to those parameters, how we can produce the fabric in gray stage, and then after processing or after finishing, we will get the fabric with the same parameters which we have analyzed. Actually, what is the process? What is the steps or what is the procedure in the industry? Whenever we are getting a fabric sample from the marketing people, the designer is analyzing the designer or the student of fabric analysis is analyzing the required parameters, and those parameters are termed as analyzed parameters. All the parameters or all the particulars which we are analyzing from a given fabric sample are known as analyzed particulars or analyzed parameters. जो parameters और जो particulars हमें analyze करने होते हैं, जो कि required होते हैं उस fabric को reproduce करने के लिए, all those parameters which are analyzed by us are known as analyzed parameters, and which are essential to calculate the loom parameters, to decide the loom parameters. And by fixing those loom parameters on the loom or in the weaving preparatory department, finally we are getting a gray fabric. So हमने जो analyze किया है वो finished fabric है. So all the parameters which we are analyzing here are from the finished fabric. अब ये parameters हमने analyze कर लिए हैं, इसके बेस पे हम loom parameters calculate करेंगे. On the basis of all these analyzed parameters or particulars, we will calculate loom parameters or loom particulars. And then उन loom particulars के according अगर हम loom को set करते हैं या weaving preparatory की machines को set करते हैं, तो finally हमें weaving के बाद एक fabric मिलेगा जिसको हम gray fabric बोलते हैं, means without finishing or without processing. Processing के पहले जो fabric है, यानी कि weaving के just बाद जो cloth beam पर जो fabric आ रहा है, that fabric is sometimes known as gray fabric, which is not processed. ग्रे फैब्रिक को हम भी प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद हमें उस फैब्रिक के अंदर वही पैरामीटर्स मिलने चाहिए जो कि एनालाइज्ड आपने किए हैं. तो जो ग्रे फैब्रिक के पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो लूम पैरामीटर्स होंगे, जो कि लूम पर जो आप सेटिंग्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैरामीटर्स मिलेंगे. पर जब आप उसको प्रोसेस कर लेंगे तो पैरामीटर्स में थोड़ा चेंज आएगा, कुछ पैरामीटर्स में चेंज आएगा, और दैट पैरामीटर्स are in the final fabric, which is processed fabric, which is finished fabric. And because we are analyzing finished fabric, इसलिए हमें लास्ट में वो पैरामीटर्स चाहिए जो फैब्रिक हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन वो पैरामीटर्स अगर चाहिए तो आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, और एनालाइज करके आपको पहले लूम पैरामीटर्स निकालना पड़ेगा. दोज लूम पैरामीटर्स को अप्लाई करने के बाद हमें जो फैब्रिक मिलेगा उसको प्रोसेस करने के बाद आपको फिनिश्ड फैब्रिक जो मिलेगा उसके पैरामीटर्स सेम होंगे जो कि आपने एनालाइज किया है. That is the whole process, and in this process many steps are there that we will discuss later on. But before that we will discuss what are different parameters or particulars which we are analyzing. And the first one is finished EPI. It means it is the number of warp threads or ends present in 1 inch of fabric. Fabric जो आपको finished fabric मिला है, जो sample मिला है, whatever the size is there, वो small size होता है, maybe 10 centimeter by 10 centimeter, 15 centimeter by 15 centimeter. But it is not essential that it will be a square size. It may be rectangular also. Length और width उसका unequal भी हो सकता है, equal भी हो सकता है. तो finished EPI क्या है? The number of warp threads or number of ends in 1 inch of the fabric. तो हम fabric के किसी भी एक जगह पर कहीं से भी हम अगर 1 इंच पे मार्क करके हम थ्रेड्स को काउंट करते हैं, या विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग ग्लास हम काउंट करते हैं, वो मेथड्स हम बाद में लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एंड्स पर इंच. फिनिश्ड वर्ड हम यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ईपीआई फिनिश्ड फैब्रिक में अलग होंगे और ग्रे फैब्रिक में अलग होंगे. लूम पर या ग्रे फैब्रिक में जो ईपीआई होगा सेम फिनिश्ड में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्या डिफरेंस होगा, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट वी विल टेक लेटर ऑन. सो फिनिश्ड वर्ड यूज करने का पर्पस है कि ये जो ईपीआई हमने एनालाइज किया है
ये फिनिश्ड फैब्रिक से एनालाइज किया। सिमिलरली यू कैन डिफाइन फिनिश्ड पीपीआई, द नंबर ऑफ वेफ्ट थ्रेड्स और पिक्स प्रेजेंट इन 1 इंच ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक के 1 इंच में कितने नंबर ऑफ वेफ्ट थ्रेड्स हैं या कितने नंबर ऑफ पिक्स हैं इन 1 इंच, दैट इज नोन एज PPI. And because we are analyzing again from finished sample, finished fabric, so we are using a prefix finished PPI. Just to distinguish it from loom EPI and loom PPI, or EPI and PPI in the gray fabric, we are using finished word along with the analyzed parameters, because analysis is done with finished fabric. Third parameter, which is a very, very important parameter, and that also we are studying in fabric structure theory also, weave, the order of interlacement of warp and weft. So we see, we try to observe the order of interlacement, we try to find out the order of interlacement of warp and weft, and how much threads we are taking, that will be equal to the one weave repeat unit, like 4x4 or 8x8 or 8x4. जितने एक रिपीट में वीव रिपीट यूनिट होगा, उतने एंड्स और पिक्स को हम एनालाइज करके देखेंगे कि उनके बीच में ऑर्डर ऑफ इंटरलेसमेंट क्या है। ऑर्डर ऑफ इंटरलेसमेंट का मतलब कहाँ पे वार्प अप है, कहाँ पे वार्प डाउन है, या कहाँ पर वेफ्ट अप है। दैट वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग ग्लास and counting needle. So weave is the order of interlacement of warp and weft, and we are finding out one weave repeat unit. Weave repeat unit means the smallest unit of warp threads and weft threads, or ends and picks, which is repeating for several number of times to form the fabric, or in the fabric, widthwise and lengthwise. That is known as weave repeat unit. So basically we are analyzing here one repeat unit, that is weave repeat unit. Whenever we are saying weave, means we are analyzing weave repeat unit. Then the next parameter is known as crimp, and this term you have already heard, or you have already learned in textile fiber. Crimp is the natural property of wool. In wool fibers, crimp is there, so you are already aware about this. What is crimp? Crimp means the waviness. जो wavy structure होता है, wave like structure जो बनता है, that wavy structure is known as crimp. But in the wool, it is natural quality of the wool. wool जब बनता है, जब naturally हमें wool मिलता है, तो उसके अंदर already crimp induce होता है. Crimp क्यों होता है वो हम already पढ़ चुके हैं. Wool is having crimped configuration. Why? Those reasons already we have done in textile fiber. But here the crimp is induced due to bending or interlacement of warp and weft. Warp और weft जब interlace करते हैं तो वो bend कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे जा रहे हैं. तो जब fabric बन जाएगा, then it will become almost permanent in the fabric. और जब आप उस weft thread को या warp thread को fabric से बाहर निकालेंगे तो ये straight नहीं होगा. जैसा कि कोन के ऊपर आप देखेंगे तो thread straight होंगे, weaving के पहले threads straight होंगे, लेकिन जैसे ये वीव हो जाएंगे, जैसे इनका इंटरलेसमेंट होगा, तो ड्यू टू इंटरलेसमेंट, ड्यू टू बेंडिंग, वो इंटरलेसमेंट के रीजन से वहां पर एक वेवी स्ट्रक्चर यार्न के अंदर बन जाएगा. तो जब अगर आप एक वार्प थ्रेड या वेफ थ्रेड फैब्रिक से निकाल के देखेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं होके वेवी स्ट्रक्चर, वेवी फॉर्म में होगा, एंड दैट वेवीनेस इज नोन एज क्रिम्प. द क्रिम्प इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ यार्न, वार्प एंड वेफ्ट. वार्प क्रिम्प, waviness present in warp threads due to interlacement of weft, and weft crimp, waviness present in weft threads due to interlacement of warp. So I think definition of crimp is clear. So now we are moving forward. The next parameter of that is analyzed parameters, count, that is yarn count, and it is a numbering system which defines the fineness of yarn. Count means yarn numbering system, which is defining the fineness of the yarn. Means yarn जो है वो कितना fine है या कितना coarse है, that is measured by a system, and that is known as numbering system, and in numbering system is also known as count. There are two systems in which count can be classified. ये जो yarn numbering system है उसको हम दो category में divide कर सकते हैं. One is
डायरेक्ट सिस्टम एंड अनदर इज इनडायरेक्ट सिस्टम। इसके बारे में आप ऑलरेडी कई सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं, particularly in spinning, your YM first and now in YM second maybe. So YM first में आप पढ़ चुके हैं। Direct system means in this system the count of yarn is expressed is the number of weight units in one length unit. You can say weight per length. Weight per length is known as direct system, in which length is fixed and weight is changing. So number of weight units in one length unit, that is known as direct system. And very popular example of direct system are denier system and Tex system. Like denier can be defined as weight in grams of 9,000 meter of yarn. Tex can be defined as weight in grams of 1,000 meters of yarn. That is very popular system which comes under direct system. And indirect system, in this system, count of yarn is expressed as number of length units in one weight unit. Just uska reverse ho gaya, length per weight. Here weight is fixed and length is changing. In that case, in direct system, length is fixed like 9,000 meter or 1,000 meter depending on the yarn numbering system, denier or Tex. Length is fixed and weight is changing. Here, weight is fixed and length is changing. Very popular example of indirect system is English cotton count, metric count, or other systems are also there that we will take later on. These are the two examples of indirect system, and here are the two examples of direct system. How we measure count, that we will see later on. The next parameter is ply or twist of yarn. So first we are taking ply, number of single yarns twisted together to form a plied yarn is known as ply of yarn. एक plied yarn बनाने के लिए हमने कितने single yarns को, कितने number of single yarns को एक साथ twist किया है। अगर हमने केवल एक ही yarn, केवल fibers को twist करके yarn बनाया है तो वो बनेगा single yarn, जो ring bobbin पे होता है, that is single yarn. फिर रिंग बॉबिंग के बाद जो हम पोस्ट स्पिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, वाइंडिंग TFO या वाइंडिंग मशीन्स, डबलर जो भी यूज करते हैं, उनका पर्पस क्या है? सिंगल यार्न को प्लाइड यार्न में कन्वर्ट करना. So ply can be defined as number of single yarns twisted together to form a plied yarn is known as ply of warp. Yarn may be single ply, double ply, triple ply, 4 ply, any number can be plied together, any number of single threads can be twisted together. Accordingly, that yarn is defined. Generally, we use plied yarn in warp and weft, but sometimes single ply yarn may be used in weft due to lesser cost. क्योंकि weft warp के ऊपर stress और strain ज़्यादा होता है, because warp is forming the shade, and when shade is formed, means few threads are lifted up and few threads are lowered down, warp threads. तो उनके ऊपर उस समय ज़्यादा stress apply होगा, और अगर उसका strength उसको बियर नहीं कर पाया उस स्ट्रेस को, तो थ्रेड ब्रेकेजेस ज्यादा होंगे. तो वार्प में ब्रेकेजेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वार्प का थ्रेड वेफ्ट के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो अगर हमें कभी यूज करना होता है सिंगल यार्न को, बिकॉज सिंगल यार्न का स्ट्रेंथ कम होगा, तो उसको हम वार्प में यूज नहीं कर सकते. अगर करना जरूरी हो तो फॉर दैट वी आर गोइंग फॉर ऑप्शनल प्रोसेस लाइक साइजिंग एंड दैट थिंग, and that at the cost that will add some cost in the fabric, and your fabric will be more costlier. So in that case, what we are doing, if we have to use the single yarn, then generally we prefer it in the weft where the stresses are very less as compared to warp threads. और क्योंकि सिंगल यार्न है, जितने हम प्लाई करते जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्लाइड यार्न विल बी मोर कॉस्टलियर एज कंपेयर टू सिंगल यार्न. तो कभी कभी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम सिंगल यार्न यूज कर लेते हैं वेफ्ट के अंदर, और वार्प में जो भी रिक्वायर्ड प्लाई है वो हम यूज करते हैं. तो जनरली कभी अगर आपको एक फैब्रिक ऐसा मिलता है एनालाइज करने के लिए जिसमें वार्प में डबल प्लाई है और एक तरफ डबल प्लाई और एक तरफ सिंगल प्लाई है, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वार्प है और कौन सा वेफ्ट है. सिमिलरली ट्विस्ट
can be defined as number of tons per unit length of yarn, per inch or per centimeter or per meter, whatever the unit we are taking. Number of tons उसके अंदर कितने हैं yarn के अंदर, उस particular unit length के अंदर, that is known as twist, and it is defined as twist per inch or twist per centimeter or twist per meter. And the yarn may be twisted in two directions. So TPM or TPI, that to find out the TPI and TPM, that will be covered in textile testing lab. So we are not covering this part here. We are just concerned with, because we are studying from the point of view of fabric structure here. So we are more focused on the direction of twist. So we are just finding out what direction is there in the yarn, of what direction of twist is there in the yarn. And there may be two directions possible in the yarn, that is S twist and Z twist. If yarn is twisted in clockwise direction, then it is called S twist. If the yarn is twisted in anti-clockwise direction, then it is called Z twist. किस डायरेक्शन में हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज फॉर्म्स द लेटर लाइक S, so it is known as S twisted. And anti-clockwise अगर है तो it forms like this. This line shows anti Z. In this line, if it is appearing like this, it is Z twisted yarn. If it is appearing like this, it is S twisted. It is like this, and this is like this. The next parameter is fabric weight per meter square. And this is generally we are measuring in grams. So it can be said it is grams per meter square. And grams per meter square, grams per square meter, grams per square meter. In short, it is known as GSM. G for gram, S for square, and M for meter. Grams per square meter. GSM means grams per square meter. That is indicating fabric weight per meter square. So weight of 1 meter length and 1 meter width fabric is known as fabric weight per meter square. इसको measure करने के लिए और इसको understand करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मीटर लेंथ लिया हमने फैब्रिक का और 1 मीटर उसका width लिया. 1 मीटर by 1 मीटर का फैब्रिक लेके अगर हम उसको weigh करते हैं तो जो weight ग्राम्स में आएगा that will be its weight per meter square, and that is expressed in grams, so it is known as GSM, grams per square meter. Another unit of weight is weight per running meter. ये हम जब लूम पैरामीटर्स लेंगे तो और डिटेल में लेंगे. At this stage, weight of 1 meter length and full width of fabric is called as fabric weight per running meter. इसमें क्या डिफरेंस हुआ? यहाँ पर लेंथ भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है. यहाँ पर लेंथ 1 मीटर है, बट विड्थ जो एक्चुअल विड्थ है फैब्रिक का, जो फुल विड्थ है फैब्रिक का, वो हम लेंगे. दैट मे बी मोर देन 1 मीटर और दैट मे बी लेस देन 1 मीटर. तो जो एक्चुअल विड्थ है और लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर फैब्रिक लेते हैं और विद एक्चुअल विड्थ लेके हम उसको वेट करते हैं, तो जो वेट आएगा दैट वेट विल बी नोन एज वेट पर रनिंग मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम्स पर रनिंग मीटर और ग्राम्स पर लीनियर मीटर. कहीं कहीं रनिंग मीटर की जगह लीनियर मीटर टर्म भी यूज किया हुआ है. थोड़ा स्पेलिंग यहाँ करेक्ट कर लें, ING होगा. So this is about the weight. Two types of units, two units we are using, two different units we are using, GSM and this grams per running meter. Next parameter, which comes in the category of analyzed parameters, is cloth length. And it can be defined as the length of the cloth is called as cloth length. कितना length बना रहे हैं? According to requirement of buyer, length of fabric is taken. ये हम analyze नहीं करते हैं, it depends on buyer. So we are just assuming, and for easiness we are assuming 1 meter length. But it will depend on the buyer. Or if you have more than one buyer, then you have to add the length of every buyer, and then you will produce the cloth length accordingly. Then comes cloth width. The width of the cloth is called as cloth width. Width is also set according to the type of cloth and its end uses. जो width है generally standard width use की जाती है industries के अंदर, and that is according to end use. कौन सा fabric, किस तरह का fabric आप बना रहे हैं, उसका end use क्या है, उसके according. And generally we are focusing on these 3 types of fabric in our lab. So we have taken standard widths for
which is taken in the industry for these fabrics. So shooting fabric, which is used for paints, uska width generally in the industry is 58 inches, but it is generally, whenever I am using generally, what it means, it is not 100%. It is not as a rule 58 inches बनाते हैं, but कुछ industries कभी कभी कुछ personal requirement होती है, particular requirement होती है, तो 60 inch का भी बनाते हैं, 56 inch का भी बनाते हैं, but standard is 58. Means it is most widely used width for shooting fabric. For shirting, 36 inches. Similarly, it varies, but most of the time 36 inches is there. So we will assume 36 inches if it is not mentioned specially for some special fabric. And towels are generally, which we are using, which we are taking in this lab, is 24 inches. Again, it may vary depending on the industry and final requirement of the buyer. So this is about the cloth length and cloth width. The next analyzed parameter is warp and weft pattern. And this is particularly for stripe and check fabrics. Like the khaki, which you are using for your dress, uniform for uniform, it is not having any pattern in the warp and weft. In that case, it is not significant to analyze warp and weft pattern. But many times you are wearing the shirts in which stripe effects are there, checks are there. So in that case, we have to analyze this parameter, warp and weft pattern. So it will depend on the fabric sample you are getting. और उसमें पैटर्न है तो हमें पैटर्न एनालाइज करना, अगर नहीं है तो नहीं एनालाइज करना है. द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कलर एंड काउंट यूज्ड इन वार्प एंड वेफ्ट पैटर्निंग. और ये जो पैटर्निंग है ये जनरली डिफरेंट कलर से होती है. कई तरह के कलर के वार्प थ्रेड्स हम यूज करते हैं इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, एंड बट इट कैन बी ऑल्सो this patterning can be produced, these effects can be produced by using different counts. कहीं पे फाइन काउंट यूज किया, कहीं कोर्स काउंट यूज किया, तो वो एज ए स्ट्राइप या सेल्फ चेक की तरह फैब्रिक में दिखाई देगा. इसी तरह एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट का भी हम पैटर्न ले सकते हैं. तो पैटर्निंग में भी ऑफ कलर, पैटर्निंग में भी ऑफ काउंट, पैटर्निंग में भी ऑफ ट्विस्ट. डिफरेंट ट्विस्टेड yarn can be also combined in a particular pattern. Then we are also analyzing the pattern. If it is produced by any, either by color or by count or by twist, we are analyzing this 11th parameter, that is warp and weft pattern. So if you count all the parameters, once again we are going through the starting 1, 2, 3. crimp दो तरह के हैं इसलिए 4 and 5. count warp and weft का दोनों का होगा 6 and 7. प्लाई दोनों की निकालेंगे तो 8, 9. ट्विस्ट वार्प और वेफ्ट का निकालेंगे तो 10, 11 पैरामीटर्स हो गए. देन दिस इज 12th पैरामीटर. ये हम नहीं निकाल रहे हैं, इसको अभी छोड़ दें. 12. क्लॉथ लेंथ 13, क्लॉथ विड्थ 14, एंड वार्प पैटर्न 15, वेब पैटर्न 16, and one more parameter we find out which is not given in this slide, that is ends per dent, denting order. तो उसको हम अगर इंक्लूड करें, डेंटिंग ऑर्डर मींस, डेंटिंग ऑर्डर किसी को याद है? कैन एनीबॉडी डिफाइन डेंटिंग? हमने थ्योरी में लिया है डेंटिंग ऑर्डर. The order in which ends are passing to the dents of the reed. Very good. Yes, how the ends are passing through the dents of the reed, that order is known as denting order. Means we are passing one end per dent, we are passing 2 ends per dent, or we are passing 3 ends per dent, we are passing 4 ends per dent, we are passing in a regular manner or in an irregular manner. That order is known as denting order. So denting order भी हम find out करते हैं. We are analyzing the denting order also from the given fabric sample, or we are assuming the denting order from the given sample according to its weave. So that is 17th parameter. So total 17 parameters. आपको एक बार फिर आप नोट डाउन कर लें कॉपी के अंदर, थोड़ा सा टाइम बच रहा है, एक बार आप नोट करें. एनालाइज्ड पैरामीटर्स, केवल नाम नोट करने हैं आपको. नंबर 1 फिनिश्ड ईपीआई, तो जल्दी करें. नंबर 2 फिनिश्ड पीपीआई. नंबर 3 वीव और डिजाइन. नंबर 4
और यहाँ ब्रैकेट में लिख लें वीव रिपीट यूनिट. वीव मीन्स वीव रिपीट यूनिट. 3 हो गए. 4 warp crimp, 5th weft crimp, and this is indicated in the percentage format. Percentage form, so write down warp crimp percentage and weft crimp percentage. 4 and 5. 6 और 7 क्या होगा? 6 will be count of warp threads and 7 will be count of weft threads. 6 और 7 हो गया. Then 8 ply of warp and 9th ply of weft. 10th direction of twist in warp yarn. 11 direction of twist in weft yarn. Direction of twist in warp and direction of twist in weft. कितने हो गए? 11 हो गए. 11 कितने नोट कर लिया आपने? Yes sir, 11 हो गए. Good. Then 12 fabric weight per meter square. In bracket write down GSM. Fabric weight per meter square. ये भी हम एनालाइज करते हैं, इसलिए हम इसको एनालाइज पैरामीटर में ले रहे हैं. बट ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसको एनालाइज पैरामीटर में काउंट नहीं कर रहे हैं. फैब्रिक वेट पर मीटर स्क्वायर और GSM that is 12. Then 13 cloth length, 14th cloth width, 15 pattern in the warp, 16 pattern in the weft, and 17 ends per dent or denting order. In this way, for any given sample, if we give you any fabric sample in lab, you have to analyze all these 17 parameters. तो आप उसमें जो आपकी नोटबुक है उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखें और 1 by 1 ये 17 पैरामीटर्स आपको एनालाइज करते हुए नोटबुक में नोट करना है कि आपने क्या क्या एनालाइज किया, आप कितना EPI आया, कितना PPI आया, कितना क्रिम्प आ रहा है, कितना क्रिम्प वार्प में आ रहा है, कितना क्रिम्प वेफ्ट में आ रहा है, वार्प के थ्रेड्स का काउंट कितना है, वेफ्ट के थ्रेड्स का काउंट कितना है. ये सारा सीक्वेंस में आपको लिखते जाना नोटबुक के अंदर. एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज एनालाइज्ड पैरामीटर्स. जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, फैब्रिक सैंपल जो हमें मिला है उससे हम एनालाइज कर रहे हैं. वी आर नॉट कैलकुलेटिंग, we are just analyzing by observing these things in the fabric with the help of some device, some apparatus, some accessories. We are finding out these parameters. We are analyzing these parameters, and that's why these parameters are known as analyzed parameters. So any questions so far? We have taken 17 parameters in 11 headings. And we have taken objects, 3 objects of fabric analysis. We have taken apparatus used in this. And then we have taken definitions of these analyzed particulars, total 17 analyzed particulars, which we are going to analyze in this semester in this subject. If you have any question, we have still 5 minutes. You can ask it. And don't hesitate, because these are the beginning classes and you are learning these things first time in your curriculum, in your course. So don't hesitate. You can ask any type of question. No question is silly question or no question is intelligent question. Any type of question you can ask. Feel free to ask. Because in the beginning classes, I will explain in details and I can repeat the things again and again. But when all these fundamentals will be covered, then we will start the practicals. And in the practicals, I will ask the questions to you. तब मैं आपसे questions पूछूंगा and then you have to answer. तो अभी आपका chance है, you can ask anything, जो भी आपको clear नहीं. And because
जो आपका वाइवा होता है एंड में, जब सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं प्रैक्टिकल, तब जो वाइवा होता है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से आते हैं। अगर आपने इनको लर्न कर लिया है, then you will get good marks in Viva also. So no question? Okay, then thank you so much. Again, we will have the class on next Thursday at the same time.